Morning. Yes. I'm Dr. Kalyani Samantha, Head Department of Arts, Communication and Indic Studies at Sri Sri University, Cuttack, Odisha. I send forth a very hearty welcome to the dignitaries to the Central Zone Vice Chancellor Conference under the aegis of the Association of Indian Universities, hosted by Sri Sri University. The major focus of this conference is to promote the quality of higher education in general, with particular emphasis on research and internationalization. This conference will provide policy recommendations for the implementation of the National Education Policy 2020 to place the Indian higher education on the global forum. I'm privileged now to request Her Excellency Srimati Anandiben Patel, Honorable Governor, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, to inaugurate the conference by lighting the lamp. I request the dignitaries to participate in lighting the lamp. I request Honorable Minister Higher Education, Government of Odisha, Dr. Arun Kumar Sahu, Honorable President AIU and Vice Chancellor GB Pant University. Thank you, Your Excellency, for initiating this AIU conference by lighting the lamp, and thank you all dignitaries for your participation. I now request Honorable President Sri Sri University, Mrs. Rajita Kulkarni, to deliver the welcome address. Thank you, Dr. Samantha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. I bow down to the presence of the Guru in this assembly. Respected Chief Guest, Your Excellency Shrimati Anandiben Patel ji, Honorable Governor of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, Guest of Honor, Dr. Arun Kumar Sahu ji, Honorable Minister of Higher Education, Government of Odisha, Professor Tej Pratap ji, President Association of Indian Universities and Vice Chancellor GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Dr. Pankaj Mittal ji, Secretary General, Association of Indian Universities, Dr. A.K. Singh, Vice Chancellor, Sri Sri University, all esteemed Vice Chancellors who are gathered in this conference as attendees and speakers from the Central Zone and other zones, all members of the Sri Sri University team, deans and HODs, members of the media, and all other guests and dignitaries present, a very warm welcome to the ARU Central Zone Vice Chancellors Meet. It is indeed a great honor for us in Sri Sri University to host this important meet, albeit virtually. The topic of our meet is promoting quality research and internationalization in higher education. We are meeting at an inflection point in history for us as a humanity. Just in this past year, almost 22 lakh people have lost their lives to COVID. In this grim time, India has emerged as a potential supplier of choice of the vaccine, with two of our own homegrown vaccines now supplied to 15 countries and totally being supplied to over 25 countries. This is a testimony to the innovation, research and development, and the core educational bedrock of excellence of our country. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's vision of Atmanirbhar Bharat is built on the foundation of the spirit of enterprise and innovation of our country. In this context, how can we all collaborate to make India the global leader in research? What imperatives does the post COVID world present us to rethink and disrupt the old norms of education? How can we execute the national education policy
to leverage the advantages of an increasingly intermingled and interconnected world. How can our teaching learning process catalyze the growth of our students to navigate them and make them ready for the future that they are facing, which is increasingly dynamic and uncertain? And most importantly, how can we ensure the holistic growth of our students, take care and nourish their mental health so they leave our campuses as happy, humane world citizens? We have a number of topics that we are going to discuss today and tomorrow, and I'm sure a lot of valuable insights will come up for all of us. In Sri Sri University, our vision, articulated by our founder and lifetime president, Pujya Gurudev, Sri Sri Ravi Shankarji, is to become the best amalgamation of the East and the West of the world. All our programs, initiatives, ethos, and the very spirit of our university is molded and guided by this vision. We are fortunate that tomorrow we will have a chance to also interact with Gurudev. If this was an in-person meet, it would have been a much more bigger delight for us to host you, and we would have had a chance to extend our warmest hospitality to all of you. But virtually also, we will try to give it our signature touch by having a short meditation break before lunch today. And on behalf of all speakers, we are proud that we will be planting a tree on our campus in each of your names. And we will end the evening today with a very beautiful and artistic Odissi dance from our own state and performed by our own students to enthrall you. I'm sure you will all love that. So looking forward to interacting, we in Sri Sri University, we are built on a land of quarries, and through quarrying, we get a wealth that is yet undiscovered. So we are hoping that these 2 days will enable us to discover a lot of wealth of discussion and debate that will lead us to some important action points that we can even consolidate, which as we go ahead towards our national conference, end of March, we will be able to consolidate some points from here. So I look forward to interacting with everyone. Welcome you once again to Sri Sri University, and very grateful to Honorable Governor Ma'am and to Arun Kumar Sahuji, our Minister of Education, for taking the time to be with us this morning. Thank you very much, and hearty welcome again. Namaste. Thank you very much, Madam, for the warm welcome to the dignitaries and the delegates and for your inspiring words. My request is now to the Honorable Secretary General AIU, Dr. Mrs. Pankaj Mittal, to give a welcome and introductory address. Thank you very much. Namaskar and pranam to all. The Chief Guest of AIU Central Zone Conference of Vice Chancellors, Honorable Governor of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, Madam Anandiben Patel ji. The Guest of Honor, Honorable Minister of Higher Education, State Government of Odisha, Dr. Arun Kumar Sahu ji. Honorable President of AIU, Dr. Tej Pratap ji. Honorable Vice President of AIU, Dr. G. Thiruvasagam ji. President of the host university, that is Sri Sri University, Dr. Rajita Kulkarni ji. Vice Chancellor of the host university, Dr. A.K. Singh ji. Governing Council members of AIU, chairs and speakers of various sessions, Honorable Vice Chancellors, coordinating team of Sri Sri University, and colleagues from AIU who have worked hard on this conference, ladies and gentlemen. First of all, I would like to welcome you on my personal behalf and on behalf of Association of Indian Universities to the AIU Central Zone Vice Chancellors Meet. As you all know that last year we got the National Education Policy, and now the biggest agenda before us is to implement that policy in letter and spirit, because we know that India has the potential to become Vishwa Guru if our policy, which is a well-grounded, very innovative, very forward-looking policy, if it is implemented in letter and spirit. Therefore, AIU felt that we should be holding all our conferences on the theme Implementation Strategy for National Education Policy 2020. The main conference, which will be held in March, will be having this theme, and as a run-up to this theme, we are holding 5 zonal conferences of AIU Vice Chancellors from the East, West, Central, North, and South Zone. The East and West Zone conferences are already over, which were on the theme
equity and access in higher education, including promotion of Indian languages, art and culture, that was held in GIS University, Kolkata. The second conference, which was West Zone Conference, was held in Jaipur National University. It was on reimagining teacher education, vocational education, and professional education. The third conference, which is being held today by Sri Sri University, is on promoting quality research and internationalization of higher education. The two more conferences will be held, one by North Zone by GGS IP University on holistic and multidisciplinary education with technology integration, and one by Geetam University South Zone Conference, which will be on governance and financing of higher education. As told by Mrs. Rajita also, we are forced to hold these conferences in virtual mode. Otherwise, the AIU conferences are very sought after events, and they are held in face-to-face mode. But this time we had to do it in the virtual mode just because of COVID-19. We hope that the national conference, which will be in March by Ambedkar Open University, Ahmedabad, Dr. Ami Upadhyay is the Vice Chancellor. We really hope that we are able to do it on the face-to-face mode. The COVID had, it had brought a lot of agony to the higher education system. But at AIU, we tried our best that because of COVID, the higher education system should not suffer much. Although the universities and colleges were closed and the students were at home, we tried our best that how to help the universities to use the online platforms, how to train the teachers to teach effectively through an online mode. We even had a tie-up with Quasphere to have a platform called QuedX, where online teaching programs are there, like how to make teachers teach online in an effective manner. We did many workshops for the placement officers for online placements. We did many research publications during this time. We brought out a book on reimagining Indian universities. Then a very good COVID-19 response toolkit was brought in collaboration with Jindal Global University on giving a step-by-step procedure on how to open the universities after COVID. A soft copy is available on the AIU website, and also the hard copy was sent to all the universities. We recently had, last year we held Khelo India University Games for the first time, which were inaugurated by the Honorable Prime Minister of India. And one important thing which we have done is that the equivalence of degrees, equivalence of foreign degrees with the Indian degrees, a mandate which has been given to AIU by the Government of India. We have computerized the entire procedure, right from uh, online application, then online payment, and downloadable equivalence certificate. All this has been computerized. Now, coming to the theme of the conference, which is promoting quality research and internationalization in higher education, we have lined up very good speakers in the three sessions. First session is on quality, where we'll be talking about teaching pedagogy. How the method of teaching also affects the quality of higher education, how to adopt the flipped classroom model, how to use the technology for improving the quality of education, how to make the education multidisciplinary or even improve the research teaching, and then how to make the students employable by introducing, say, compulsory internship programs. And the most innovative concept, academic bank of credit, which will give wings to the students, a lot of freedom to the students, and the students will be having the freedom to choose the university, to choose the program, to choose the course, and the freedom of speed. So that type of quality issues will be discussed in today's session. Today, we'll also be having a session on research, which will be chaired by Vice Chairman of UGC, Dr. Bhushan Patwardhan. And we all know that India currently spends about 0.69% of GDP on research. And if you compare it with foreign countries, it is 2.8% in USA, 4.3% in Israel, and 4.2% in South Korea. So how to improve the research funding, and the National Research Foundation, which has been announced in the budget also, and which is prominently figuring in the national education policy, how it will help in promoting the research in our country. And internationalization, again, I must say that in this policy, a lot of emphasis has been given to internationalization of higher education, whereby 100 top universities of the world are invited to open their campus or establish their campuses in India. Our universities are allowed to open their campuses in foreign country. Every university must have international office. The foreign credit transfer facilities there, and the joint degrees, which we were asking for a very long time, that has all been agreed to in this policy.
So I feel that we will be promoting internationalization in a big way, but in tomorrow's session, we are having international speakers also who will tell that how India can promote internationalization, how India can attract more students, more foreign students to its universities. So we are looking forward to very exciting sessions, which will be very academic content will be very good, and the participation of VCs is expected. So once again, I welcome all the vice chancellors. I again welcome the Honorable Governor of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. I welcome the Honorable Minister of Higher Education, Odisha State, to this conference. And my pranam to you and all the best for a very good conference. Thank you very much. Thank you, Dr. Pankaj Mittalji, for your welcome speech and for setting the tone for the conference. I now request Honorable President AIU, Dr. Tej Pratap, to give his presidential address. Thank you very much. I hope I am audible. Yes. Honorable Chief Guest of today's function, Madam Anandiben Patelji, the Governor of Madhya Pradesh as well as Uttar Pradesh, President of Shri Shri University, Rajita Kulkarni ji, Honorable Minister Dr. Arun Kumar Sahu ji, Higher Education Minister of Odisha, my colleague, Vice President, Dr. Thiruvasagam, the host Vice Chancellor of Shri Shri University, Ajay Kumarji, the governing council members of Association of Indian Universities, and all of you colleague Vice Chancellors who are members of AIU and Vice Chancellor of different universities of Central Zone, ladies and gentlemen, and all colleagues of Shri Shri University who are online today. First of all, namaste and welcome from Association of Indian Universities. As President of Association of Indian Universities, I have the pleasure of being present in all of these meetings. Colleagues, when we were designing that when we meet annually once, and this time we are definitely going to meet in Ahmedabad if permission, if the conditions permit us. I would have very much liked that we are together to debate on these things. As Dr. Mittal has already explained, we thought, how do we spend this year as Vice Chancellor talking about in these central zones? The biggest thing before us is the national education policy that was announced last year. And all of us, each university has to prepare its implementation. One is individual preparation, but there also is a dimension of a collective thinking. How, as a nation, we think about the implementation strategies. When we were talking about this, then I realized that there are different aspects within the national education policy. That's exactly how each zone has been given 2-3 subject matters, which are actually part of the national education policy. Coming to Central Zone, the 3 topics that you would be debating in next 2 days is the quality issue, the research subject, and the internationalization. I will dwell upon some questions that probably you should be debating about. When we talk about quality, it's just not about academic quality. The academic environment, the quality of academic environment in our universities. Quality also is about the product that we get, the students, and the product we take out. Are we talking about the students who are good in taking marks only, the quality of learning that they have in the universities? If that is the issue, then you would also be talking about the academic, the teaching quality, the pedagogy quality, the whole system, delivery systems quality in the universities. The problems that each one of you are facing, the implementation strategy combines 2 things. What we expect, what are the ground conditions? I expect each one of you in the Central Zone to debate and put in these questions for the best quality. What are the bottlenecks that we have? And I know there are several. And biggest thing that all of us are facing
and I bring it to the knowledge of our chief guest today, Madam Governor. The biggest issue that all universities today face is when we Vice Chancellor meet together is the finances. And these finances, when we see our daily and monthly issues, then most of the government universities, actually the Vice Chancellor are bogged down these things, and many times they say, well, there's hardly any space left for talking about quality when it's the issue of survival. Between survival and quality, what do we do? And then how do we actually address this issue to improve that it doesn't become a bottleneck? Similarly, when we talk about research, in research, the dimensions that you would be discussing is, it's not only about quality research that we talk about. Well, it's one thing to have very good papers, a good research quality, and research is in the university is not only like in a research institution. Through research, you also produce the human sources, the all PhD students, they do research. The quality of PhD and that actually determines what kind of final product we bring, and they become our inputs. They are scientists or they are teachers, and their quality is determined what kind of research training they went through. I want to bring in here the dimension that you would be talking about. I'm from agriculture university background. When we are locally, we are questioned what is the relevance of your research to the local community. And then when we are collectively talking about in a national system, and annually we talk about what is the relevance of research we are doing to our nation, food security, nutrition, and then diversity, raising incomes of farmers and others. And as soon as we sit with the Association of Indian Universities Vice Chancellors and globally, then the question becomes, what is the quality of research? The issue is entirely different. So it is about impact factor, it is about indexing, it is about, we can't compare ourselves with IIT. They are talking about cutting edge research. When these issues are put together, then there is one thing to all of you colleagues to consider. We belong to different sectors, and all of us have different responsibilities even in research. General universities, technical universities, research universities, medical universities. So there are issues in research, definitely in agriculture, in forestry, in horticulture, our relevance to local communities, to regions. A horticulture university in Odisha has to think of the farmers in Odisha, and agriculture university, the farmers in Odisha, is it giving new varieties, how it is giving technologies for plant protection. I think it is more important than impact factor papers. And when our colleagues are confronted with that situation, then we feel embarrassed. My question to my colleagues is, how do we address these things under the new education policy, that you are good internationally, and you are also valuable to local community, you are also valued by your state governments and national. The research domain brings us these issues to the fore, and vice chancellors, when they sit together on a platform, probably will have the right issue to be discussed collectively. What should be our implementation strategy? Similarly, in internationalization, internationalizing the things, very different questions are coming before us with NEP. NEP opens up opportunities for international universities to come in. Is that the kind of internationalization you and I are thinking of? Should we have all international university campuses where we say it is internationalization? Or we improve our academic standards of physical standard infrastructures to see that foreign university students come up here? We were in US, Illinois, and talking about internationalization. The issue Illinois University brought up, they said, India is 5 to 7 years behind now to talk about that we will come there. Harvard will not come here, Cambridge will not come here, Oxford will not come here. If there are other universities coming, they would be C standard. Are you thinking of inviting all kinds? No. Then how do you raise your standards and
This is also again to be debated by scientists. We are not looking here about US students coming here. Are you thinking of that? Or is it serving the nations who are at par with us or below us? That is the kind of internationalization. Do we have students here? Or in many countries, this is for money's sake. That we are promoting internationalization because that's a foreign exchange earner also. Or for India, it is a different issue. What should be the combination of factors in internationalizations that we see with respect to our own country? I think the inputs of vice chancellors would be very important in designing very valuable practical implementation strategies when we go about it. We would be discussing all these things when we are together in Ahmedabad. These are kind of small issues I would like to reflect. You have 2 days, and I'm sure at the end of the day tomorrow, we will have a sum up on these things. And whatever you bring out as a product will again be an input to our annual meet in Ahmedabad. Until then, thank you very much, Madam Rajita, for organizing this show at your university. We would have very much liked to be there. Nevertheless, providing the platform with your colleagues there, it is great. Thank you once again, all Madam Chief Guest, Honorable Minister Saab, and colleagues in Shri Shri University. Thank you. Thank you very much, Dr. Tej Pratap, for being absolutely topical. By focusing on the challenges that higher education scenario in India faces, teaching, learning, research, and internationalization, and for providing directions for future growth of Indian higher education. My request now is to our guest of honor, Honorable Minister of Higher Education, Government of Odisha, Dr. Arun Kumar Sahu, to address the delegates of the conference. Namaskar. Namaskar. Myself, Dr. Arun Kumar Sahu from Odisha Higher Education Department. Her Excellency Srimati Anandiben Patel, Honorable Governor, Dr. Tej Pratap, G.B. Pant University VC, Dr. Mittal, Mrs. Ranjita Kulkarni, Professor Ajay Kumar Singh, and other dignitaries, those who have participated in this meeting. A very good morning to you all. It's a matter of great pride for me to be a part of the Central Zone Vice Chancellor's meet hosted by our very own Shri Shri University. Firstly, I would like to congratulate this university for hosting this event with such dedication and enthusiasm. I avail myself of this opportunity to express my sincere gratitude and heartfelt thanks to all the dignitaries present here. The Higher Education Department for Odisha has been playing a key role in improving the quality of education in the state by establishing a value-based society and molding the youth. Education is known to all, but the question here is, what should be done to ensure that the tool is used to shape the future of our country is relevant and effective enough for today's dynamic world? And the answer lies in the theme of today's meet, quality research and internationalism. India has a well-acclaimed brain power, and promoting research will only help India move up the global intellectual leader. It is well acknowledged fact that research plays an important role in the economic growth of the country. The significance of research in education is the significance of research in education arises from its promotion of creative thinking, finding solutions of the problems in a methodical and scientific way.
Carrying out research in India has a number of challenges, such as the absence of intellectual stimulation, emphasis on rote learning, lack of scientific knowledge, inadequate data and training in research methodology. A number of states should be implemented to foster research, such as industry academia collaboration, development of vocational skills, provision of more funds and inclusion of research as criteria for faculty promotion, which will help learning joyful and creative. Every professor should be responsible to make their institution a source of new knowledge, new theories, and new technologies. Over the last 5 years, internationalization of higher education and research has become one of the key policy priorities for the central government as well as our state government. India has the potentials to emerge as a top destination for global universities to bring in capital, latest education technology, innovative pedagogy, and facilitate institutional mobility. This will help students to get their degrees at a much lower cost from good education institutions. Having said enough about what is being done, what should be done? I assure you all that Odisha government will fully support in accelerating the higher education sector of the country, as we believe the higher education is the most powerful tool to change the world and make it a better place and a better civilization. With these words, again, I am thankful to this university by giving this opportunity to me to participate in this Central Zone Vice Chancellor's Meet 2020-21. Namaskar. Jai Hind. Thank you, sir. On behalf of the AIU, Dr. Arun Kumar Sahu, the guest of honor and the Honorable Minister of Higher Education, Government of Odisha, for sparing his time for this occasion and for leading from the front as always to create a dynamic beginning for this conference. We are grateful to you, sir, for your insights on research, and I'm sure the delegates will deliberate upon your ideas in the forthcoming session. Thank you very much, sir, for inspiring and supporting us. I now solicit Her Excellency Honorable Governor of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, Srimati Anandiben Patel, to release the special issue of the journal. Honorable Minister Dr. Arun Kumar Sahu, President Dr. Tej Pratap, Dr. Pankaj Mittal, Honorable President, Sri Sri University, and Honorable Vice Chancellor, Sri Sri University, to join the release of the journal. It's a journal which is 91 years old and is published every week without fail for the last 20 years. Under the able leadership and editorship of Dr. S. Ramadevi Pani. She is the editor of this journal. On behalf of the AIU, I thank Your Excellency for your kind gesture of releasing the journal. I now request Her Excellency Srimati Anandiben Patel, Honorable Governor of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, and the Chief Guest of this program to address this August gathering. उड़ीसा के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी, AIU के अध्यक्ष प्रोफेसर तेज प्रताप जी, श्री श्री यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट श्रीमती रंजीता कुलकर्णी जी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव
डॉक्टर पंकज मित्तल जी, श्री श्री विश्वविद्यालय कटक उड़ीसा के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, ऑनलाइन जुड़े हुए सभी कुलपतिगण, सभी अधिकारीगण एवं महानुभाव, मेरे लिए ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज मुझे भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं श्री श्री विश्वविद्यालय कटक उड़ीसा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मध्य जोन कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ देश में उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसे 1925 में देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को आकार देने में सरकार और उच्च शिक्षण संस्थाओं के समर्थन के लिए अधिकृत केंद्रीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इस संगठन से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे शिक्षाविद, दार्शनिक एवं विचारकों ने इस संगठन के अध्यक्ष रहते हुए न केवल इसे सिंचा तथा पल्लवित किया, बल्कि अपनी विद्वता से उच्च शिक्षा को उसके उच्चतर स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना समाज की आवश्यकता तथा विद्यार्थियों की रचनात्मक शोध, तार्किकता एवं नवाचार की भावना पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में भारत की परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्य एवं तकनीकी ज्ञान तथा कौशल विकास में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा अर्थात केजी से पीजी तक की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का उद्देश्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि शिक्षण संस्थान निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर ऑनलाइन शिक्षा सभी तक पहुंचा सके। इसके माध्यम से संबंधन, शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार करते हुए सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर सभी स्तरों पर रोजगार परक शिक्षा सुनिश्चित करने का कार्य भी रूसा द्वारा किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति में कई अच्छी पहल है। दीर्घकालिक दिक्कतों को दूर करने के साथ ही भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के प्रयास किए गए हैं। देश के 200 शीर्ष संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता, प्रतिस्पर्धा और समकक्ष समीक्षा वाले अनुदान प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय शोध फंड की शुरुआत करना है। उच्च शिक्षा निगम को बाजार से दीर्घावधि के ऋण जुटाने की अनुमति मिलना और विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्थायी केंद्र स्थापित करने की इजाजत देना जैसी बहुआयामी प्रयास भी है। नीति शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के सहअस्तित्व के साथ ऐसी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण का प्रयास है जो समाज और राष्ट्र का विकास कर सके। नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। उच्चतर शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर कम से कम 50% तक पहुंचाना है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमलीकरण को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। यह विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। मुझे विश्वास है कि सबके लिए आसान पहुंच, समानता, गुणवत्ता
वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत संभव पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति हमारे भारत देश को सतत विकास के लिए अग्रसर करेगी। शिक्षा संस्थानों में से नागरिक शिक्षित एवं संस्कारित होते हैं। हमारी युवा पीढ़ी आज बौद्धिकता के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में भी अत्यंत समृद्ध है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा व तकनीकी कौशल में समन्वय आवश्यक है। इस दिशा में वर्तमान में केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणात्मक एवं सुरक्षात्मक शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर नीतिगत बदलाव और नवाचार किए हैं। उन्हें धरातल पर लाने के लिए व्यापक चिंतन के साथ विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयास जरूरी है। सरकार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना के अनुसार न्याय एवं समानता की संकल्पना को पूर्ण करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र पर कार्य कर रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से न्यू इंडिया का कार्य तेज गति से प्रगतिरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत विजन के दृष्टिगत उच्च शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से अनुसंधान और उद्योग आधारित कौशल सशक्तिकरण पर केंद्रित हो, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को अवसर प्रदान करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण के साथ रोजगार के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस तरह दृष्टिकोण स्नातक तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले युवाओं के लिए मशाल वाहक के रूप में कार्य करेगा। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में कई अलग अलग मॉड्यूलों के परिचय द्वारा एक बड़ा मार्ग होगा। जब विद्यार्थी कौशल विकास करेंगे तो वे स्वयं का उद्यम भी आसानी से प्रारंभ कर सकेंगे और उससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें स्टार्टअप इंडिया में अवसर मिलेगा और वे वहां पर अपने कौशल का समुचित उपयोग कर सकेंगे। मेरा मानना है कि इस शिक्षा नीति के पूरी तरह से क्रियान्वयन के पश्चात देश के शिक्षा जगत में दूरगामी सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे। कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन जैसी विपरीत परिस्थितियों में जब लोग चिंतित थे कि आगे पढ़ाई कैसे होगी, तब भारत सरकार के सहयोग से स्वयं प्रभा चैनल पर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने न केवल लेक्चर्स उपलब्ध कराए बल्कि इस पर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी। बहुत सीमित संसाधनों के साथ हमारे देश में बहुत कम समय में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया और इस कार्य में हमारे देश के युवाओं के विशाल उत्साह, जुनून, ऊर्जा और बुद्धि के कारण इसको अपनाने में मदद मिली। वर्ष 2021-22 के बजट में केंद्र सरकार ने न सिर्फ अच्छी शिक्षा पर फोकस किया है बल्कि लोगों के कौशल में निरंतर वृद्धि होती रहे, इसके लिए भी घोषणाएं की हैं। जैसे निजी क्षेत्र में भागीदारी और स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने की कोशिश होगी। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए 64,000 करोड़ की व्यवस्था वर्ष 21-22 के बजट में की गई है। देश में अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। इसके माध्यम से देश में नई तरह की खोज हो सकेगी। भारत में शोध की बड़ी आवश्यकता है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना मील का पत्थर साबित होगी। इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी एक साल पूरा हो गया। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है और हम सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम के साथ दुनिया में सबसे तेजी से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कर रही है। यह मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक तो है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है।
इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के माध्यम से भारत अपनी ही नहीं बल्कि दुनिया की सेवा इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है, आत्मनिर्भर है। यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है। भारत जितना सक्षम होगा उतना ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा। इसके साथ ही देश को विदेशी मुद्रा का भी अधिक अर्जन हो सकेगा। मैं चाहूंगी विश्वविद्यालयों को सामाजिक कार्यों में भी सहभागिता करनी चाहिए ताकि सामाजिक समस्याओं का जल्द ही समाधान हो सके। मेरा आशय है कि विश्वविद्यालय टीबी ग्रस्त बच्चों को गोद ले और आंगनवाड़ी केंद्रों को पुष्टाहार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली बेटियों का एनीमिया यानी रक्त की कमी की जांच कराए ताकि वे कुपोषण का शिकार न हो। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं को 100% प्रसव हॉस्पिटल में हो, इसके लिए उसको प्रेरित किया जाए तथा स्तनपान को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी प्रकार विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालयों को 1 कॉलेज 1 विलेज अर्थात कम से कम एक गांव गोद लेना चाहिए, जिससे कि महाविद्यालय द्वारा लिए गए गांव की वांछित सहायता हो सके। हमें सामाजिक सेवाओं के माध्यम से गौशाला, गैस फर्टिलाइजिंग, गोबर का उपयोग, लघु कौशल के कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। तकनीकी विश्वविद्यालयों और कृषि विश्वविद्यालय के समन्वय से किसानों के लिए वजन में हल्के और सस्ते टिकाऊ कृषि उपकरण विकसित करने चाहिए जो किसानों को आसानी से उपलब्ध कराए जा सके। ये उपकरण हमारे छात्रों द्वारा बनाए जाएंगे जिससे विश्वविद्यालय और छात्र दोनों आत्मनिर्भर होंगे। हमारे देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने कोरोना-19 अवधि में सैनिटाइजर टनल, पीपी किट, वेंटिलेटर तैयार करने का कार्य किया। इसका इस्तेमाल देश में करने के साथ ही विदेशों को भी इसका निर्यात किया गया। इस कार्य को करके भारत ने अपनी प्राचीन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का परिचय दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा विश्वविद्यालयों एवं प्राविधिक विश्वविद्यालयों के मध्य चिकित्सीय यंत्र बनाने के लिए समझौता हो, जिसके अंतर्गत चिकित्सीय जांच के छोटे छोटे आवश्यक उपकरण जैसे पल्स ऑक्सीमीटर तथा रक्त की जांच के उपकरण आदि तैयार किए जाए। चिकित्सीय यंत्रों की मरम्मत भी कर सकते हैं। यह भी आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से उचित होगा। इसके साथ ही यह प्रयास भी होना चाहिए कि विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ भारतीय विश्वविद्यालय का अनुबंध हो ताकि हमारे विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के नवीनतम अनुसंधानों से परिचित होते हुए उसका अपने देश के लिए लाभ उठा सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री की संकल्पना है कि हमारे विश्वविद्यालय गुणवत्ता रैंकिंग में सुधार करते हुए 100 तक की रैंक प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस दिशा में विदेशी विश्वविद्यालयों से समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोरोना काल में लोगों के सामने रोजगार का संकट मुंह बाए खड़ा था। ऐसे विपरीत समय में महिलाओं ने अपनी मेहनत और बुलंद इरादों के दम पर एकजुट होकर अद्भुत कार्य करके दिखाया है। महिलाएं बड़ी से बड़ी चुनौती को अवसर में बदल सकती है। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश के जबलपुर जनपद के गांव चीचगांव की जनजातीय महिलाओं ने प्रस्तुत किया है। इन महिलाओं को जब पता चला कि जिस राइस मिल में वह काम करती है वह बंद होने वाली है, तब मीना रहंग डाले ने स्वयं सहायता समूह बनाकर राइस मिल को ही खरीद लिया। अब महिलाएं सफलतापूर्वक उसे चला रही है। करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा भी कर लिया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी की कानून की पढ़ाई करने वाली गुरलीन चावला ने अपने घर से स्ट्रॉबेरी की खेती प्रारंभ की और बाद में अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। अब वहां अनेक किसानों महिलाओं ने स्ट्रॉबेरी की खेती करना प्रारंभ किया था, जहां पहले कहा कुछ भी नहीं होता था।
कृषकों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में भारत सरकार ने 2024-25 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए नीति नियमावली एवं आवश्यक धन का प्रावधान भी किया है। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2024-25 तक को 2,500 किसान उत्पादक संगठनों FPO के सृजन का संकल्प लिया है। हर संकट अपने साथ एक अवसर लाता है। कोविड-19 भी अपवाद नहीं है। विकास के क्षेत्र में अब किस तरह से नए अवसर उभर सकते हैं, हमें इस पर चिंतन करना होगा। कोविड पश्चात विश्व में अनुसरण की बजाय हमें मौजूदा परिपाटियों से आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। इस बात पर विचार जरूरी है कि हम अपने कौशल एवं अपनी क्षमताओं का किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें ताकि भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सके। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं तथा उनकी क्षमता पर ठीक उसी प्रकार जोर देते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी भी देते थे, जिनकी देश ने 12 जनवरी को जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। हमारे एक और महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को देश ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। ये दोनों ही महान विभूतियां हमारी प्रेरणा का स्रोत है। इसके प्रेरित होकर ही हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देना है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस कुलपति सम्मेलन के निष्कर्ष देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अंत में मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद। On behalf of the AIU and Sri Sri University, it is my honor to thank Your Excellency for gracing this occasion and supporting the efforts of AIU, carrying forth the endeavor of placing India on the global platform of knowledge and wisdom. We are immensely grateful for your benevolent presence and your time and your inspirational words. Let me mention with pride now that Sri Sri University champions the environment. To express our gratitude, a deep sense of gratitude to all the dignitaries, we are planting a tree that will bear their names. Thank you, Your Excellency. I express our gratitude all the dignitaries of the inaugural session by planting a tree each for them. For the Honorable Minister Higher Education, Dr. Arun Kumar Sahu, Honorable President AIU, Dr. Tej Pratap, and Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General AIU, and Mrs. Rajita Kulkarni, Honorable President, Sri Sri University. Now I take this opportunity to request Professor Ajay Kumar Singh, Honorable Vice Chancellor, Sri Sri University, Cuttack, Odisha, to deliver the vote of thanks. सभी को मेरा सहृदय प्रणाम, नमन सबको। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मैं इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। नमन को, जिन्होंने समय निकाला आज अपने व्यस्त कार्यक्रम से और हम सभी को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित किया। जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जो महिलाओं ने राइस मिल को खुद ही उसको चलाना शुरू किया, और जितने भी उदाहरण आपने दिए हैं वो बहुत ही सबको प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी इस तरह के कदमों को उठाएं। और जो पॉलिसीज़ की आपने बात किया कि नई शिक्षा नीति जो है वो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई है, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने इसीलिए इस सम्मेलन को जो है ऑर्गेनाइज किया है ताकि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सके। शोध के क्षेत्र में विचार मंथन होगा, इंटरनेशनलाइजेशन कैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे आएँ और यहाँ के विश्वविद्यालय बाहर जाएं,
दोनों में समन्वय हो, आपने इस बात को भी रखा है। और मैं समझता हूँ हम सब जो आज यहाँ पे जितने भी वाइस चांसलर्स उपस्थित हैं वो सब ये प्रण लेके जाएंगे कि हमें भारत की यूनिवर्सिटीज़ को, विश्वविद्यालयों को शीर्ष पे लेके आना है पूरे विश्व में। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की जैसे आपने बात किया, हम सब उसके लिए कार्यरत हैं और आपको वादा करते हैं कि हम पूरा जोर लगाएंगे अपनी तरफ से, ना सिर्फ श्री श्री यूनिवर्सिटी में, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब जो आपने आज अपना भाषण में बोला है, और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन उड़ीसा के जो हैं उन्होंने भी जो बोला है, उन सबको हम लोगों ने नोट किया है। और 2 दिन तक जो भी इस सम्मेलन में होगा, चर्चाएं होंगी, उन सबको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के लिए रिकमेंडेशन बना के एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आगे भेजेगी ताकि क्रियान्वयन में उसको लाया जा सके। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष एवं गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप जी, जो प्रेसिडेंट हैं इस समय AIU के, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के प्रधान सचिव डॉक्टर पंकज मित्तल जी, आपको धन्यवाद कि आपने मौका दिया श्री श्री यूनिवर्सिटी को इस कार्यक्रम को होस्ट करने का। और आज सभी लोग उपस्थित हैं, काफ़ी संख्या में सारे वाइस चांसलर्स हैं, उन सबको धन्यवाद। श्री श्री यूनिवर्सिटी के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने शिक्षा के संबंध में कहा है कि शिक्षा केवल जानकारी लेने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो और मनुष्य जीवन एक पुष्प की तरह खिले। और नई शिक्षा नीति भी इन्हीं सब चीज़ों को सामने लेके आती है और हम उसके लिए सब एकजुट हैं, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है AIU का, सारी जोन्स में ये हो रहे हैं और फिर नेशनल लेवल पे होगा। और ये सारे को हम लोग इकट्ठा करके ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 2021 के सत्र से ही सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये लागू हो जाए। हमने श्री श्री यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी कर सकते थे 2021 से लागू करने के लिए वो किया है, और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम इस सब को करेंगे। प्रधानमंत्री जी का स्टडी इन इंडिया का जो एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का नारा दिया है, आइए हम सब इसे साकार करने हेतु पूरे तन मन से लग जाएं। पुनः आज के सम्मेलन में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Professor Ajay Kumar Singh, Vice Chancellor, Sri Sri University, for your kind words and the vote of thanks that you proposed to the delegates of this conference. Ladies and gentlemen, the inaugural session has indeed begun with a very auspicious note. As we move ahead to the next session, interface with officers from apex bodies, I request my colleague, Ms. Gayatri Dume, to conduct the session. I hand over the session to Ms.